See, every lyricist is an individual person, you see. Me as a lyricist, I knew that push myself in a certain way at the business woman, and at the same time be a creative person. It's very challenging. Yeah. So I went through a lot of things in my head. But I had just decided that I will not work for free. Yeah. Music wise, मुझे विशाल भारद्वाज जी के compositions बहुत पसंद हैं. बॉम्बे में struggle करना है, मुंबई में तो पैसा चाहिए. और ये प्रोफेशन इतने सालों में मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा पैसे में वीक है. अजय अतुल, नटरंग, मराठी सिनेमा के जितना उनका काम है, माय गॉड, आई एम लाइक माइंड ब्लोइंग. सो इट्स लाइक आई लव ऑल ऑफ दीज नेम्स दैट आई टुक एंड मोर. Hey Pinky, welcome to Famous TV. Tell me, what's your story? So my story is a little longer one. You want me to go all the way? We've got all the time. So I'm from Pune, Pinky Poonawala from Pune. I did my master's in communication studies. And like everybody, I came to Mumbai to make films. But I specifically wanted to make films. But my first few jobs were with music channels and Z TV and all that. And I very quickly, within a year, realized that this is not for me. And so luckily for me, I had directed a short film, which at that time had got screened at MIF. And Mr. Ashutosh Gowarikar had seen it and he loved the film. And he said, come and join me on Swades as a DA. Wow. So from there, I immediately left my channel jobs, big paying jobs, and jumped into becoming a DA. I learned a lot of work from him. 2.5 years working on Swades was like the best base I could have got in filmmaking, to be very honest. And then from there, I moved on to, like everybody, moved on to assisting on other films and, you know, lots of other films. And eventually, after 10 years, I think I fell ill. And I realized in that, you know, जब हम बीमार हो जाते हैं and कुछ और कर नहीं पाते, तो हम सोचने लगते हैं कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, you know. And in that moment of truth and honesty with myself, I realized that I don't think I want to direct films and go through the whole process that involves in getting your script approved and producer and, you know, all that. At that point, I felt, and then I didn't know what to do. And so I was at a loss, and then came an opportunity to write lyrics. So I had genuinely never thought of writing lyrics. And a friend called and said, "Aapki Hindi achhi hai. There is a composer who's come from Calcutta. Please, he's got his music, la la la, you know. So us pe kuch likh dijiye. At least it'll help him." And I resisted that. And then I said, okay, it's a good deed. It'll help someone. And I just penned down like 5-6 songs. And I realized I was a natural writing on music. And I wrote it very fast and gave it. And then I forgot about it. And few months down the line, I got a professional call from a composer, Harpreet Singh. And he said कि Sony Music का you know Indian Idol 5 winner का song compose हो रहा है and 2-3 lyrics का ये reject हो गए हैं. So would you like to write? And I was like, oh my God, how did he get to know? Then now I know the story. Like one music producer had heard these scratches that I had done to help this guy out. He went and said, there is a girl who writes very fast and she's good at what she does. And that's how I got my first professional call. Like literally, like the universe sent it to me. And I prayed a lot and I said I wasn't confident and I wrote it and the song got approved. And that song is called Rehnuma. And Shri Ram Chandra won Indian Idol 5. So he was the singer who sang that song. And after that, the journey just rolled. Like that song itself got me nominations as debut lyricist for Jima, Radio Mirchi. And then that song later again got picked for a Hollywood release in India, you know. Meanwhile, people started noticing that there's a new lyricist that's come. So then work started coming in. So I just felt that the universe wanted me to write lyrics. And that's how my journey as a lyricist started. That's what I've been doing now. That's lovely. So it just sent you in that direction, just gave you this huge... Yeah. This was like literally, it wasn't my plan. It was God's plan, I think, or the universe really wanted me to do this. And since I believe that the universe wanted me to do this, I have stuck with all the ups and downs that come with our profession and still stuck around, and I'm still doing it and I'm still loving it. That's great. So tell me, what is a lyricist's experience in the Bollywood industry? What is music industry like? What is your engagement with it?
Run us through that. See, every lyricist is an individual person, you see. So, सबकी journey अलग रहेगी या experiences अलग रहेंगे. Me as a lyricist, I knew that because of my earlier career, I knew that I didn't want to push myself in a certain way. जैसे कि आपको एक चीज़ है जो आपको composers को जाके मिलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, या डायरेक्टर्स से मिलना होता है कि हमें गाना दे दीजिए, ये हमारा काम है. तो मैं तो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री से आके फिर म्यूजिक में आई थी. तो मैंने अपने लिए ये चुना कि मुझे ये नहीं करना. Like then I would get fed up of that journey, you know. So but the general process is that once you know you want to write lyrics, you need to reach out to composers, and then be a businesswoman about it. And at the business woman, and at the same time be a creative person. It's very challenging. Because so you probably were a little take away from your yes. So I was fortunate enough that I didn't have to reach out a lot, and my work circulated and people reached out to me, which was my comfort zone, because if I had to reach out, I would have lost the love for writing. You know, it would become too technical, कि इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये करना है. So I'm very happy in my space right now from the kind of songs that I've been getting to write. I have moved from ghazal writing. I have done Indian fusion classical writing with the biggest of artists. And now I'm writing with my husband and Saurabh Joshi and Nikhil D'Souza. I'm writing all their indie stuff for the younger, you know, that's a regular thing. So, like I've enjoyed all kinds of work. And like they say that, you know, Gucci never goes on sale. So like you also don't have to, like, I'm just kidding. Yeah, more because I was a shy person and I didn't want to put myself through a lot of things that a lyricist has to go through. Also, at the time I started, there were very few or none women, very few women who were writing lyrics at that time. What was that experience like, being a woman in this space? So I think the work didn't come to women, क्योंकि एक सोच थी कि सारा प्लेबैक तो पहले हीरो ओरिएंटेड होता है. आधे से ज़्यादा सॉन्ग्स हमारे मेल पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं. तो शायद इंडस्ट्री में ये सोच थी कि एक वुमन मेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख पाएगी. तो इसलिए शायद कम लिरिसिस्ट विमेन को काम मिलता था या थी. प्लस टाइमिंग्स, लाइक इंस्पिरेशन, जैसे बड़े कंपोजर्स आज जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, रात के 3 बजे आपको कॉल करके बोलेंगे अभी स्टूडियो आ जाओ लिखने के लिए. दैट माइट नॉट बी सूटेबल फॉर यू एज अ वुमन, स्पेशली से इफ यू मैरिड और यू हैव किड्स, यू स्टिल अ प्रोफेशनल, बट 3 o'clock reaching a studio which a man can do much more easily. Probably those kind of hurdles were there. I feel कि आर्टिस्ट जो होता है ना वो मेल या फीमेल नहीं होते हैं, है ना. तो अगर आपको मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है या फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, आप में कैपेबिलिटी बस इतनी होनी चाहिए कि आप अपने आप को किसी और के दुख या सुख के पोजीशन में डाल सकते हैं कि नहीं. कैन यू पुट योर सेल्फ इन समवन एल्सेस place, shoes. So that quality if you have, then you can write songs, write scripts. It has nothing to do whether you're writing for a male or writing for a female. Second thing, observation. We have, I think that's a natural thing. Like हम very keen observers होते हैं. Like अगर हम कैफे में कॉफी भी पी रहे हैं तो हम सिर्फ कॉफी नहीं पी रहे हैं, हम आसपास नेचुरली सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. किसी का बॉडी लैंग्वेज, किसी की आंखें, कोई क्या कर रहा है, क्या, तो वो सब अंदर नेचुरली जाता है. सो लाइफ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होता है. तो दैट्स व्हेन यू कैन really write about something. Right, you have to be connected to your surroundings. Correct. Sensitive, to be vulnerable also, which is vulnerability is a very important trait, I feel, for an artist. Yes, you have to keep your heart open. Because the biggest fear is that when your heart is open, you can get hurt. But then if you don't let yourself feel, then you can't write. Nothing good can also come then that you can't write. So what are some challenges you face in the industry, and what are some challenges a lyricist particularly faces in the industry? A common challenge that most lyricists are facing and have faced is the issue of credit and mentions. Today we are in the world of social media.
Instagram has become extremely important. And somehow all the creators, producers, they're just forgetting to tag the lyricist or mention the lyricist. You see, that is an extremely important thing. See, we are people behind the camera. We are not here to show our face or to become, known by our face. But कोई भी काम इंसान करता है वो दो चीज़ों के लिए करता है, राइट? एक मतलब पर्सनल ये होता है कि उसको दिल में खुशी फील हो रही है वो काम करने में. अब जब वो मीडिया के लेवल पे काम है तो उसमें क्रेडिट इम्पोर्टेंट होता है कि ये काम किसने किया है, राइट? ऑफ कोर्स, एक्नॉलेजमेंट. हाँ, और ये काम आपकी हॉबी नहीं है, ये आपका घर भी चलाता है, तो आपको पैसे भी मिलने चाहिए. तो ये दो चैलेंजेस मैंने देखे हैं कि पैसे देते वक्त मैंने तो एक बार ये भी सुना था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, कि लिरिक्स क्या है. लिरिक्स तो एक चने वाला भी लिख सकता है. यू सी सच है, पोएट्री आपके दिल का एक्सप्रेशन है, तो चने वाले भी तो लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते? बट दैट वाज स्पेसिफिकली सेड टू डीमीन समवन कि इट इज नथिंग. जब तक ये परसेप्शन नहीं बदलेगा लोगों के लिए, बिकॉज वर्ड्स के बिना गाना नहीं बन सकता, तो गाने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी है. इनफैक्ट म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी ज़रूरी है. म्यूज़िक प्रोडक्शन या म्यूज़िक प्रोड्यूसर को बहुत कन्वीनियंटली भूला जाता है. वैसे ही लिरिसिस्ट के नाम बहुत ईजिली भूले जाते हैं. तो मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है कि मेरे वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म्स पे अभी रिलीज हुए हैं और हमने गाने लिखे हैं. कभी टाइटल ट्रैक है, कभी की हार्ट ब्रेक सॉन्ग है या लव सॉन्ग है, और सीरीज के प्रोमोज उस पे कट के बाहर आ रहे हैं. बट एंड क्रेडिट्स में, अच्छा ओपनिंग क्रेडिट्स में तो नाम हम भूल ही जाएं, बट एंड क्रेडिट्स में भी हमारा नाम है ही नहीं, भूल गए हैं. फिर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं अभी स्पेसिफिक नाम नहीं ले रही, बट सभी को पता है जो इंडस्ट्री में है कि OTT प्लेटफॉर्म्स जब सॉन्ग रिलेटेड प्रोमो शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, सॉन्ग रिलेटेड प्रोमो, नॉट एक्टर रिलेटेड प्रोमो, नॉट अ सीन रिलेटेड, उसमें भी वो सॉन्ग के क्रिएटर्स कौन है, सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, ये मेंशन नहीं करते. और एक बार मैंने एक OTT प्लेटफॉर्म से पूछा भी था कि मेरा एक बहुत बड़ा शो में बहुत बड़ा गाना रिलीज हुआ था, और मैं देख रही थी सारे प्रोमोज उनके आ रहे हैं, एंड ठीक है, तो गाने का प्रोमो भी आ गया क्योंकि टाइटल ट्रैक था. तो मैंने पूछा कि मैंने OTT प्लेटफॉर्म को पूछा कि मेरा नाम एटलीस्ट इस प्रोमो में क्यों नहीं है. मैंने एक्चुअली बहुत बार उन्हें इंस्टाग्राम में मैसेज DM किया था, तो किसी का जवाब नहीं आया था. तो मैंने फाइनली कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कि हु आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस सॉन्ग. अब जैसे ये कमेंट गया, 5 मिनट में सब लोग हड़बड़ा गए. मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ रहा है कि आपने ये क्यों डाला है, आप ये कमेंट हटा दीजिए. उनको OTT प्लेटफॉर्म प्रेशर डाल रहा है कि ये तो क्या कहते हैं वो, ये हो जाएगा, मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, आप लिरिसिस्ट को बोलिए निकालें. फिर मुझे अपने वेल विशर्स डरा रहे हैं, अरे ये OTT प्लेटफॉर्म तुम्हें वापस काम नहीं देगा, हटा दो. फिर मैंने क्या किया, मैंने एज अ ऑडियंस पूछा, ये आपने प्रोमो डाला है, ये गाना किसने बनाया? इतना ही पूछा ना. मुझे पता था वो मैंने ही लिखा है, बट बनाया किसने ये तो बताए. तो मुझे सम हेड ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म कॉल आता है, बोलते हैं, वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं, बोलते पहले हम बात करें या पहले आप नाम हटाएंगे. मैंने बोला नाम मैं हटा दूंगी, मुझे किसी को तकलीफ, कमेंट हटा देंगी. मतलब कमेंट में हटा दूंगी, मुझे किसी को तकलीफ नहीं करनी है, मुझे जेन्युइनली जानना है कि नाम क्यों नहीं है. जब आप हमारे गाने से आपके शो को प्रमोट कर रहे हो. हाँ. तो उन्होंने बोला कि ये हमारा फॉर्मेट है, इंटरनेशनल फॉर्मेट है, हम लिरिसिस्ट और इनका नाम नहीं लिखते. क्यों नहीं लिखते? फिर अंदर से किसी ने बताया कि एल्गोरिदम 30 हैशटैग्स के ऊपर होता है, @ के ऊपर होता है, तो एल्गोरिदम खराब होता है. तो एल्गोरिदम बेनिफिशियल तब होगा जब 30 @ हो, और वो 30 @ एक्टर्स होंगे क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज्यादा है. तो एथिकली आप एथिक्स भूल के आपका बेनिफिट देख रहे हैं, है ना. तो ये किस्सा भी हुआ था मेरे साथ. उसके जैसे मैंने कहा कि तो मैंने तो हटा दिया था कमेंट, बट सब बहुत हड़बड़ा जरूर गए थे कि अब ये कुछ कंट्रोवर्सी ना हो जाए. तो जवाब मिल गया, बोले आगे हम चेंज करेंगे, अब देखें कब चेंज करेंगे ये फॉर्मेट. तो आई जस्ट फील बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आई थिंक द चेंज विल हैपन व्हेन द लिसनर्स, लाइक
common people, students, we start paying attention कि किसने गाना क्रिएट किया है. अगर हम कोई गाना सुनते हैं या कोई गाना रिलेटेड चीज़ हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो लेट्स मेक इट अ हैबिट टू राइट एंड अप्रिशिएट द क्रिएटर्स. एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज नॉट सॉन्ग रिलेटेड. रील में सॉन्ग जा रहे तो पहले तो हम ये सीखें कि हमें देखना है नाम. सिर्फ सिंगर का नाम तो ऊपर आ जाता है, वो बेचारे उस मामले में लकी हैं कि नाम ऊपर आ जाता है. बाकी कंपोजर होगा, म्यूजिक प्रोड्यूसर होगा, लिरिसिस्ट होगा, ये किसी को पता ही नहीं है. और हमें गाने हम फील करते हैं लिरिक्स से. कभी कभी सिंगर क्यूट लगता है तो भी हमें गाना पसंद आता है. So, आवाज भी उनकी अच्छी होनी चाहिए. बट लिरिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि लेट्स ब्रिंग दैट चेंज एज लिसनर्स. लाइक इफ आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग, make it one this thing that okay, I'm going to, if I like it, right, किसने बनाया, of course, of course, बस उतना ही. Yeah. So Pinky, what is the music industry like, and what are the changes you've seen in the last 10 years? Because I'm sure there's a very rapid change happening with social media and everything. There's too much content. I don't blame listeners कि nothing is sticking. बहुत गाने बन रहे हैं, which is good. It's giving opportunity to many more people to create songs. I really like the independent zone because वहाँ पे आप you're not forced by any production or a film thing. तो आप अपना music create कर सकते हैं. But recall value ना बहुत कम हो रहा है क्योंकि content बहुत है and everything is number based. I wish I could change that. Second, I grew up listening to really soulful music and lyrics, and sometimes the downfall of independent, I think, like everybody thinks they can write. Sometimes I spot a lot of wrong Hindi in the new indie song, and then I can't enjoy the song कि just because sound correct होना चाहिए, so they are using, कभी कभी गलती हो जाती है हिंदी में, तो मुझे लगता है उतना होमवर्क जरूरी है. क्योंकि आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे सॉन्ग को डिजाइन कराने के चक्कर में भी वो बहुत लेनी चाहिए. जैसे इश्क वर्ड है तो उसको इश्का कर दिया है, वो ठीक है. बट गलत हिंदी मतलब फ्रेजिंग, दैट आई कैन नॉट उतना केयर लेना चाहिए कि हम पूरा ही स्टैंडर्ड ना गिरा दे. बाकी आई फील द चेंजेस आर लाइक, आई फील one good thing is that it's giving opportunities to many more musicians to create music, the independent music scene. Of course. And I just feel it's good that now music is not just about film music, because music India में ज़्यादा reach सिर्फ film music का होता है, but with the Spotify and all these other platforms coming in, I think बहुत artists को एक ये मिल रहा है. They have good number of listeners also. In fact, I met a actor friend in the gym few days back, and he told me क्या कर रही हो, तो I said आजकल मैं ज़्यादा independent music के लिए लिख रही हूँ, सौरभ जोशी के साथ भी, निखिल डिसूजा के साथ भी, या दूसरे भी जो सिंगर्स आ रहे हैं. तो इसे अच्छा है, आजकल मैंने फिल्म म्यूजिक सुनना बंद ही कर दिया, मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुन रहा हूँ. कोई भी नहीं सुन रहा, आई डोंट थिंक. मैं भी नहीं सुनती. नहीं ना, यू मेंशन इट, आई ओनली लिसन टू लाइक, हैव यू हर्ड ऑफ शामून इस्माइल, मतलब ये सारे. So जिसका जो, so that is a good thing. I'm enjoying that because people have a choice and it's not just restricted to film music. Plot, it has to be all according to, it's काफी restrictive हो जाता है, I feel. See, reach हमेशा film songs की ही ज़्यादा रहेगी हमारे इंडिया के इसमें, because इतना बड़ा budget and promos and radio and actors, and we love our actors, right? Like to see them do that, so reach हमेशा हो रहेगी. So I love India is there only. Yeah, and I love this film. I love the film song scenario also because it's such a big scape and all that. But the big changes that independent music is happening, and there are so many platforms that are supporting indie artists. Right. That I'm really happy about. That's good. So Pinky, what is your creative inspiration? Where do you find your creative inspiration? What is? Do you have a process? Or does the universe just give you a signal? So, okay. So I have a little different process than what I've heard other lyricists have. मैं रात को काम नहीं करती है. Okay? आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री रात को काम करती है. मैं सुबह काम करती हूँ.
उसके पीछे एक्चुअली दो चीज़ें हैं. अगर व्हेन आई स्टार्ट समथिंग, अगर मैं वो ख़त्म नहीं करती तो मुझे नींद नहीं आती. ओके, सो अगर सपोज आई लिसन टू अ ट्रैक in the night and I start thinking and I've not completed it, then all night that track will keep playing in my head and it'll spoil my sleep, and my sleep is extremely important for me. So I never start writing a song in the night. Even if it's a dark song, sad song, I can feel it in the morning. Okay. So I need a quiet morning. That's very important. I cannot have my body doing utensils and I need silence basically. So I get 2 hours of that and I'm good to go. So I have to just listen. Generally आजकल म्यूजिक पे ही लिखा जा रहा है. बहुत कम बार हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें कहते हैं कि आप लिख लीजिए, हम कंपोज करेंगे. और उसमें भी और भी कम होता है कि जो हम लिखते हैं उस पे कंपोज होगा, बिकॉज हमारे लिखने के बाद फिर कॉम्पोजिशन के हिसाब से हमें वापस लिखना भी पड़ता है. सो बेसिकली माइट एज वेल राइट ऑन द कॉम्पोजिशन. ऐसा अभी चल रहा है सिस्टम. तो आई लिसन टू द ट्रैक इन द मॉर्निंग and then it just flows. I really feel I was, like I said earlier, it's meant to write lyrics. It's effortless for me. I love doing it. So basically, once you start writing, you have accomplished something, tabhi you finish it. You don't finish half-hearted. I listen to the track 3-4 baar, music only. And if there is any brief I need to take from the artist, then I do. Like, if any. Or sometimes it's like, no, you write what you feel. The music tells you what. It just naturally tells you. And then I just write. Nice. There is no process. That is actually the best. It just comes and it God gift, isn't it? I'm grateful. कुछ तो give दिया because अगर ये नहीं होता तो I didn't know what I would be doing. But very lucky to have found it, I feel. Yeah, I am. I am. See, I have actually found in my life what I love doing, and that's writing songs, and it saying a lot. It's I actually love it. I know I love it. There are challenges, like it cannot run your house, because work, like every freelance work, you don't know, when the money will come, how much money will come, Yeah. Even the biggest of lyricists in the industry are probably doing one big film a year. And that is not enough in 2 years. So the financial thing, it's not as strong, because singers get to go and do shows and concerts if they click. So they also have their journey of struggle. So once they click, they can earn from shows. Or even I've heard that even they don't get paid for playback. So not every time. I mean, I've heard. I cannot vouch for it, but sometimes yes, sometimes not. Okay. And they have to sing lot of scratches for free. Scratches के तो कोई पैसे नहीं देता, just जाके आपका गाना है. तो वो सब चीज़ें hurdles है. But I think anything that's difficult to do, you can only do it if you love it. And we all love, like I love what I'm doing. The people around me from the music industry just love what they're doing, whether it's playing an instrument or singing or, composing or myself writing. Love ke bina, it's not possible to stick to it. So even to the newer ones that are coming in, what advice would you want to give to them? Yeah, so if you want to be a lyricist, practically give yourself so many years that if you click, then you're here. If not, then you pick something else, because financially it can become difficult if you don't click on the longer run. And as a prep, be more keen about life, observing emotions. Don't feel scared to feel emotions. Of course, language, keep reading a lot of stuff so that your language is strong. If you want to write Hindi songs, then Hindi, English songs, then English. And keep your heart open to feel, That is the way to go about it. बॉम्बे में स्ट्रगल करना है, मुंबई में तो पैसा चाहिए. और ये प्रोफेशन इतने सालों के बाद मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा पैसे में वीक है, कम्स डाउन इन द लैडर. आगे जाके क्लिक होगा तो बहुत अच्छा है. बट अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं और आप लिरिसिस्ट बनना चाहते हो, तो आज ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि 2-3 चीज़ें लोग करते हैं. लाइक लिरिक्स भी लिखेंगे, म्यूजिक प्रोडक्शन भी करेंगे, कंपोजिंग भी करेंगे सपोज. तो ये 2-3 चीज़ आर्ट अगर आप में होगा तो योर चांसेस आर बेटर. मल्टी
That's a practical advice. Great. Okay, so Pinky, how much should a fresher expect money-wise? How much do you think they'll make, and what is the trajectory of that money? And So I can tell you my experience. When I started off, people were not willing to pay me. Then they like wanted collaboration करो बस. हाँ कि मौका हम दे रहे हैं. हाँ, Then they exposure wanted दे रहे yeah. Then they wanted to pay money like 5,000 and 10,000 and the whole for a song. for a song. Yeah. Most of them wanted me to work for free. So I was fortunate enough that I had a home of my own in Bombay, you know, and I have this very, you know, righteous way of doing things. I was like, I hate it when even singers have to sing scratch for free. Because यार वो कांदीवली या किसी आइलैंड से धक्के खाते हुए आपके बैंड्रा के पॉश स्टूडियो में अपनी जेब से पैसे खर्चा करके पहुंच रहा है, यू नो. और उस अगर ऐसा भी हो सकता है, उसकी स्ट्रगल ये है कि जो उसने आज 100-200 रुपए बसेस में और ट्रेन्स में धक्का खा के यहाँ पहुंचा है, आज उसको रात को खाने के लिए पैसे नहीं होंगे. तो आपके पास पैसे हैं, आपका क्लाइंट नहीं दे रहा है, एटलीस्ट उसे 1,000 रुपीज थैंक यू दे दो कि वो उसका आने जाने का खर्चा बच जाए. तो it's very unfair the way our industry is. Like in any other job, I hope I'm not speaking to controversial things that people don't hate me, but in any other job, like you know, कि like how your question is कि okay, you start at this salary, इतने साल के बाद या इतना target के बाद में you'll move to this, you'll move to this, then you'll move to this. Grow. There is no such format over here. It's just a lot of luck. I have to tell, there are a lot of composers in the industry who are respecting and paying well also. Like the people that I am working with, because I refuse to work for free. So I had to deal with my fear कि मुझे काम नहीं मिलेगा, you know. And ऐसा हुआ भी. मेरे फर्स्ट अवार्ड के बाद में 1 साल मुझे काम ही नहीं मिला. जबकि I was thinking अब तो अवार्ड हो गया, अब तो मुझे बहुत काम मिलेगा. So I went through a lot of things in my head. But I had just decided कि I will not work for free. You know, and कभी कभी ऐसा जेन्युइनली होता है कि कोई इंडी आर्टिस्ट है, सपोज इंडिपेंडेंट की बात कर रही हूँ, ज्यादातर पैसे का प्रॉब्लम वही होता है क्योंकि वो अपनी जेब से गाना बना रहे हैं, यू नो. तो मैं बोलती हूँ 100 रुपया दे दो. You know, if I really like some artist and I know कि they don't have the money in the making, but that habit of paying has to be there. Yeah. बाकी again I'm saying with this web series and OTT and all coming, one good thing is that people are getting paid. बट ऐसा कोई रेंज नहीं है कि आप आएंगे तो आपको इस से स्टार्ट होगा और वहां तक जाएगा. आपका काम कितना अच्छा है, कौन से लोगों से आप मिल पाते हैं और किसके साथ काम कर रहे हैं, फिल्म्स में काम कर रहे हैं या इंडी में काम कर रहे हैं या OTT में काम कर रहे हैं या एड फिल्म मेकर्स पे वेल, लाइक यू नो, एड फिल्म्स एंड एजेंसीज पे रियली वेल ऑन टाइम, रियली अप्रिशिएट, लाइक यू नो, कॉर्पोरेट्स, बिकॉज लिरिक्स सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री और इंडी नहीं है. So those are also options. So they pay well. There's no system. It's tough. You have to create your own. Get hold of them every time. You have to decide what you think you deserve and quote for that and be prepared. How much you can endure. Yeah, and how much you can endure. Yeah. So last question for you, Pinky, is what are your favorite music lyricists and composers? Oh, lyricists and composers. I love Amitabh Bhattacharya work. I'm so excited. And why? Because he comes up with something new every time. I have had the opportunity to meet him. He's a very silent, nice person. I like him as a person. And I love his songs. Okay. Then Swanand has been a friend. We used to hang coffee shops pe and all. In fact, he was the one who told me कि तुम्हें lyrics लिखने चाहिए. You shouldn't shy away. So I like the uniqueness of Swanand Kirkire's writing. गुलजार साहब तो मतलब उनका बुक आया था 100 पोएट्री लिरिक्स का. तो जब मैंने मेरा पहला गाना लिखा था तो मॉम ने मुझे एक डायरी दी थी और उनका बुक गिफ्ट किया था जो मैंने पढ़ा. एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मेरा भी ऐसा एक 100 गानों वाला बुक छपेगा. तो आई एम ऑन माई वे. सो गुलजार साहब की मैं फैन. म्यूजिक वाइज मुझे विशाल भारद्वाज जी के कॉम्पोजिशंस बहुत पसंद हैं. वेरी सोलफुल. ऑफ कोर्स
have had the opportunity to meet him and talk to him, and he's equally a good human being. So Salim Merchant, सलीम सुलेमान, सो उनके जो स्पिरिचुअल साइड के सॉन्ग्स होते हैं, सूफी म्यूजिक एंड ऑल, वो मुझे बहुत पसंद है व्हाट दे डू. अजय अतुल, नटरंग, मराठी सिनेमा के जितना उनका काम है, माय गॉड, आई एम like mind blowing. I really love their work. In fact, I got a chance to meet them also, and I've met all of these people, and he asked me, "तू मराठीत लिहिशील का?" मैंने मराठी में लिखोगी क्या? अच्छा. तो मैंने बोला मी मराठी बोलते पण मी लिहित नाही, मतलब इट्स माय टॉकिंग लैंग्वेज, बट मेरी लिखने की लैंग्वेज नहीं है. पर क्यों ऐसा? वो मतलब आई कैन स्पीक इन मराठी बिकॉज आई एम फ्रॉम पूना, बट इट्स नॉट माई थिंकिंग लैंग्वेज जिसमें पोएट्री फ्लो होगी. Yeah, that makes sense. You know, so yeah, so these are a few of my favorite people. I also I like what the people I'm working with, like Nikhil D'Souza ka jo music in the indie space that he's putting out, and that's very refreshing. It's very cool, chill vibe, and we work together. We write lyrics to, you know, he tells me what he's thinking, and I listen to his music, and then kind of we brainstorm. So that whole work process is nice. So enjoy. Like there are some good tracks that we have done. Ek Waqt karke ek album hai. So you need to. I know. Oh, you've heard. Okay. Yeah. So that album is really nice in the indie space, you know. Then I have personally enjoyed working with Papon, another singer, and his voice is great. It transports me, है ना? Always. Yeah, so he has magic in his voice. But this was a song I did for Coke Studio for Papon, which he had composed, बेनाम ख्वाहिशें. So that song मैंने भी लिखा है, but उसमें खुमार and other songs भी थे. So that whole episode, I think, of Papon's music, I really like Coke Studio. I like what he does. And so there's so many. I might be forgetting a few, I'm sorry. I like my husband's voice, Saurabh Joshi. He's singing with Rekha Bharadwaj on stage. So I love Rekha ji's voice. Yeah. Then I worked with Richa Sharma. I love her voice. Oh my God. Actually, the thing is, you need to... I really love music, singers, creators. So जब मैं किसी को मिलती हूँ ना, तो मुझे उनसे प्यार हो जाता है, वो मेल हो फीमेल हो. एक बार नीति मोहन के साथ मैंने गाना किया था, और उन्होंने इतना अच्छा गाया. वो सैड सॉन्ग था कि like I didn't know, I just wanted to give her something, you know, जैसे पहले राजा महाराजा कैसे कुछ गले से निकाल के दे देते थे. I just wanted to give her something, and nothing. So I was wearing my new earrings, you know, fake थे but new थे. I just removed them, and I told her, please can you take this? I just want to you know, express how much like मेरे words gratitude अच्छे से गाए. So so it's like I love all of these names that I took and more. This just makes me realize that India also has such great artists, musical artists, because I think where I've been growing up, like in urban Bombay, I started listening to all these Hollywood music, and now I'm coming back to this, and I'm like, yeah, this is so soulful, this is so pure, and you know, so much in our own country. Yeah, anyway. So thank you so much, Pinky. This was such an honest, expressive, and really nice conversation with you. Thank you for opening up and telling us all these important things that we need to know, and it needs to go out into the world, and people need to acknowledge it. And hopefully this video is going to help out and do some of that. So thank you so much for coming here. Thank you. And see you soon. Thank you.